Hello and welcome to Express News with me, Deepika, your daily half-an-hour window that brings you all the latest news and updates. Let's begin. India's Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of a Hindu shrine at Kalki Dham in Uttar Pradesh's Sambhal district. Prime Minister Modi also unveiled a model of the Kalki Dham temple. The program also witnessed the participation of saints, religious leaders and many others. Prime Minister Narendra Modi offered his prayers and also performed rituals during the ceremony. While addressing the gathering, Prime Minister said that Kalki Dham will emerge as another great centre of the Indian faith. Prime Minister Narendra Modi also said that for the first time, India is being seen as the land of possibilities in the field of technology and digital technology. India's Uttar Pradesh's Chief Minister was also present at the inauguration. In his address, he said that India is moving ahead on the path of development. Prime Minister Narendra Modi launched 14,000 projects worth more than 10 lakh crore rupees at the 4th groundbreaking ceremony for investment proposals received during the UP Global Investors Summit 2024. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath felicitated Prime Minister Narendra Modi during UP Global Investors Summit in Lucknow. Prime Minister Narendra Modi also inaugurated an exhibition at the groundbreaking ceremony in Lucknow. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, in the last 7 years, crime has reduced in Uttar Pradesh and business culture has expanded. India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hosted European Union ambassadors in New Delhi on Monday. The leaders had discussion on India-European Union ties as well as on regional and global issues. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal skipped the sixth summon of the Enforcement Directorate issued to him for questioning into a money laundering case linked to alleged irregularities in the Delhi Excise Policy 2021-22. India is hosting a 9-day mega naval exercise in Visakhapatnam. More than 50 countries are participating in the 12th edition of the Milan exercise. The 9-day exercise would be a platform for participating navies to share ideas to enhance security on high seas and ensure safety of maritime commerce for growth and prosperity of all. Lieutenant General Upendra Dwivedi on Monday assumed the appointment of Vice Chief of Army Staff. India's Navy Chief Admiral R. Hari Kumar praised the role of Indian industry in achieving self-reliance in defence sector by 2047 at the inauguration of manufacturing plant of Naip Defence and Aerospace Limited in Maharashtra's Pune. The biennial Singapore Air Show is all set to kick off on Tuesday and will conclude on the 24th of February. India's Sarang helicopter displays team of the Indian Air Force conducted its inaugural practice display on Sunday. The 394th birth anniversary of Maratha Emperor Chhatrapati Shivaji Maharaj is celebrated on 19th of February. Devotees throng Ayodhya's Ram birthplace temple for the darshan of Ram Lala. Since the inauguration of the temple, more than 1 million devotees have visited the holy site. Education ministers and delegations from 21 different countries visited Vidya Samiksha Kendra in India's Gujarat on behalf of the World Bank to learn about different teaching methods. Indian markets ended in green on Monday. Sensex rose 281.52 points to close at 72,708.16. Nifty advances 81.55 points to close at all-time high of 22,122.3 points. Nifty Bank also rose 150.7 points to close at 46,535.5. Gold futures maturing on the 5th of April stood at 62,001 rupees per 10 grams on MCX. Silver futures maturing on the 5th of March stood at 71,530 rupees per kilogram on the multi-commodity exchange. The dollar was steady on Monday after data last week showing the US inflation remained sticky and cast doubts on when the Federal Reserve would start its easing cycle. The dollar index, which measures the US currency against 6 major rivals, started the week down 0.058% after clocking 5 straight weeks of gains. Asian shares were off to a stuttering start on Monday as fading chances for early rate cuts globally soared the mood, while Chinese markets returned from holiday with only muted gains. Japan's Nikkei dipped 0.3%, having surged more than 4% last week to stop just short of its all-time high.
Ground staff at German airline Lufthansa will go on strike on Tuesday, which is going to be the latest industrial action to hit Germany's transport sector as workers demand more pay. Indian Meteorological Department has forecasted an intense spell of rainfall and snowfall activity over the western Himalayan region for the next 2 days. The Met Department said rainfall is likely over the plains of northwest India till the 21st of February. The department alerts for fairly widespread moderate rainfall over North India's Punjab, Haryana, Delhi, West Uttar Pradesh and Rajasthan. Moderate to heavy snowfall continued to cover India's Himachal Pradesh Atal Tunnel in Rohtang, bringing cheers to residents, tourists and farmers. Local authorities have also taken measures to ensure normal heating and water supplies. A waterspout moving over southern Florida blew debris into the air as it made landfall in Kudzu Bay in Florida on Sunday. Weather authorities confirmed the waterspout as a tornado. The authorities said that no injuries have been reported, but one structure has been damaged. Sandstorms in parts of northwest China brought orange skies and disrupted traffic across the region on Sunday. Toll gates were shut down in Xinjiang. Police and rescue teams evacuated stranded people on highways. Storms are expected to continue throughout the region. Exceptionally dry weather has caused a historic 2-month delay in the annual migration of Australia's Christmas Island red crabs. The Israel Defense Forces continue to operate against Hamas in Gaza. On Monday, IDF troops identified and eliminated a terrorist who fired a rocket towards Kibbutz Be'eri from central Gaza. The IDF carried out targeted operations in Western Khan Yunis, where AK-47s, drones and explosives were located. The troops also conducted targeted operations on terrorist targets in Khan Yunis. Israel has declared 10th March as the deadline for Hamas to release all hostages. Benny Gantz, the war cabinet minister, stated that if the hostages are not freed by then, the fighting will continue, extending to areas like Rafah. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that not launching Rafah offensive will equal to losing the war with Hamas. Israel condemned Brazil's President Lula da Silva for comparing the Gaza conflict to the Holocaust, accusing him of being anti-Semitic and trivializing the Nazi genocide of European Jews during World War II. The International Court of Justice on Monday opened hearings on eventually issuing a non-binding advisory opinion on charges against Israel in respect of Palestinian territories. The United Nations Security Council is likely to vote on Tuesday on a push by Algeria for the 15-member world body to demand an immediate ceasefire to the Israel-Hamas conflict. A British maritime security company called Ambre reported an attack on a British cargo ship in the waters between Yemen on the Arabian Peninsula and Djibouti and Eritrea in the Horn of Africa. Qatar Energy chief said that Red Sea shipping disruptions would limit the arrival of products to customers in the long term and that diversions were not ideal as they were added to the cost and length of the journey. The United States conducted 5 self-defense strikes in areas of Yemen controlled by the Houthis on Saturday. It struck 3 mobile anti-ship cruise missiles. 2 police officers and a first responder were killed in the U.S. state of Minnesota while responding to an emergency call. The incident took place during a domestic abuse call for assistance. Huge crowds took to the streets of Mexico's capital to protest against the country's government ahead of the 2nd of June presidential election. Thousands of people dressed in pink flocked to the capital city's main plaza, roaring "Get Lopez out." More than 60 people were killed in a tribal fighting in the northern highlands of Papua New Guinea. The violence took place on Sunday and was connected to a battle between 2 tribes. While campaigning in the state of South Carolina ahead of the polling for nomination, U.S. Republican presidential contender Nikki Haley lashed out at her rival Donald Trump, reminding her supporters of the legal woes that the former U.S. president faces in various courts. Russian forces have claimed full control of the eastern Ukrainian city of Avdiivka after Ukraine's troops withdrew on Sunday. Russian President Vladimir Putin hailed the fall of Avdiivka as an important victory and congratulated Russian troops. The foreign ministers of China and Ukraine met on the sidelines of the Munich Security Conference in Germany. Leaders of both the countries discussed mutual cooperation. British Prime Minister Rishi Sunak and European Commission President Ursula von der Leyen spoke to each other about Ukraine, Gaza, the Red Sea and the death of Alexei Navalny in Russia on Sunday. European Union foreign ministers met in Brussels on Monday. The Council exchanged views on the humanitarian situation in Gaza, settlements and regional development with regard to the situation in West Asia and Sahel region.
Japan hosted Ukraine's Prime Minister on Monday in Tokyo to discuss the reconstruction of Ukraine and pledge a new bilateral tax treaty as the Ukraine conflict rages on. Japan's Prime Minister Kishida Fumio said in a speech that Japan stood with and continues to stand with Ukraine as Russia's offensive on Ukraine enters its third year. Japan has pledged more than $10 billion worth of financial aid. Tensions are escalating in the waters near Taiwan as China intensified patrols around a group of islands controlled by Taiwan. China's Coast Guard, specifically its Fujian division, announced on Sunday that it would enhance maritime law enforcement and conduct regular patrols in the waters around Xiamen, China and Taiwan's Kinmen Islands. Pakistan People's Party Chair Bilawal Bhutto Zardari rejected a proposed power-sharing arrangement with Pakistan Muslim League Nawaz, in which the Prime Minister's office would be shared between two parties. Reacting to PPP Chair's remarks, PMLN leader Ishaq Dar said that the plan to form a coalition government was still on, as he pointed out that there was no other choice available to them. The lower chamber of Nepal's legislature passed the Financial Procedures and Financial Liability Ordinance by a majority on Sunday. The ordinance opened doors for the Nepali government to submit principles and priorities of the budget before Parliament by the last week of February. Turkish rescue teams have released an underwater footage of the interior of a sunken ship. The 69-meter cargo ship sank in the Marmara Sea off the coast of Turkey's northwest Bursa province. A battery recycling plant in southern France caught fire with 900 tons of lithium batteries, causing a cloud of black smoke. And now let's go live across to Guwahati, where Prime Minister Narendra Modi would be virtually sharing a message for the athletes at the opening ceremony of Khelo India University Games. जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर, असम सरकार के मंत्रीगण, अन्य महानुभाव और देश के कोने कोने से उपस्थित युवा एथलीट्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आप सभी से जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस बार नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में अलग अलग शहरों में ये गेम्स होने जा रहे हैं। इन खेलों का मैस्कट एक तितली अष्टलक्ष्मी को बनाया गया है। अष्टलक्ष्मी को बनाया गया है। मैं अक्सर पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत की अष्टलक्ष्मी के रूप में देखता हूं और बोलता भी हूं। इन गेम्स में एक तितली को मैस्कट बनाया जाना इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट की आकांक्षाओं को नए पंख मिल रहे हैं। मैं इस इवेंट में हिस्सा लेने आए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देश के कोने कोने से आए आप सभी खिलाड़ियों ने गुवाहाटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भव्य तस्वीर बना दी है। आप जमकर खेलिए, डटकर खेलिए, खुद जीतिए, अपनी टीम को भी जिताइए और हार गए तो भी टेंशन नहीं लेना है। हारेंगे तो भी यहां से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्वी भारत तक देश के हर कोने में खेलों से जुड़े ऐसे आयोजन हो रहे हैं। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के साक्षी बन रहे हैं। कुछ दिन पहले लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ था। उससे पहले तमिलनाडु में
खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, उससे भी पहले भारत के पश्चिमी तट के दीव में भी बीच गेम्स आयोजित हुए थे। ये आयोजन बताते हैं कि देश के कोने कोने में युवाओं को खेलने के लिए, खिलने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिल रहे हैं। इसलिए मैं असम सरकार और अन्य राज्य सरकारों को भी इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, आज समाज में खेलों को लेकर मन भी बदला है और मिजाज भी बदला है। पहले माता पिता अपने बच्चों को किसी से मिलवाते समय खेलों में उनकी सफलता को बताने से बचते थे। वो सोचते थे कि खेलों की बात करेंगे तो ये इंप्रेशन जाएगी कि बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है। अब समाज की ये सोच बदल रही है। अब माता पिता भी गर्व से बताते हैं कि मेरे बच्चे ने स्टेट्स खेला, नेशनल खेला या फिर ये इंटरनेशनल मेडल जीत कर आया है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही खेलों को सेलिब्रेट भी करें, और ये खिलाड़ियों से ज्यादा समाज का दायित्व है। जिस तरह 10वीं या 12वीं बोर्ड के नतीजों के बाद अच्छे नंबर वाले बच्चों का सम्मान किया जाता है, जिस तरह कोई बड़ी परीक्षा पास करने के बाद बच्चों का सम्मान होता है, वैसे ही समाज को ऐसे बच्चों का सम्मान करने की भी परंपरा विकसित करनी चाहिए जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इसके लिए हम नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में खेलों का जो सम्मान है, जिस तरह वहां के लोग खेलों को सेलिब्रेट करते हैं, वो अद्भुत है। इसलिए फुटबॉल से एथलेटिक्स तक, बैडमिंटन से बॉक्सिंग तक, वेट लिफ्टिंग से लेकर के चेस तक, यहां के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से नित नया आकाश छू रहे हैं। पूर्वोत्तर की इस धरती ने खेलों को आगे बढ़ाने की एक संस्कृति विकसित की है। मुझे विश्वास है कि जो भी एथलीट्स इस टूर्नामेंट के लिए यहां आए हैं, वो नई चीजें सीखकर इसे पूरे भारत में लेकर जाएंगे। साथियों, खेलो इंडिया हो, टॉप्स हो या ऐसे अन्य अभियान हो, आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलरशिप देने तक हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। इस वर्ष खेलों के लिए रिकॉर्ड 3,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। हमने देश के स्पोर्टिंग टैलेंट को साइंटिफिक अप्रोच के साथ नई शक्ति दी है। इसी का नतीजा है कि आज भारत हर प्रतियोगिता में पहले के मुकाबले ज्यादा मेडल जीत रहा है। आज दुनिया उस भारत को देख रही है जो एशियन गेम्स में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज दुनिया उस भारत को देख रही है जो पूरी दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सकता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने गजब की सफलता हासिल की है। 2019 में हमने इन खेलों में 4 मेडल जीते थे।
मैं गर्व से कह सकता हूं कि 2023 में हमारे नौजवानों ने 26 मेडल जीते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि ये मेडल्स की संख्या भर नहीं है, ये प्रमाण है कि अगर हमारे युवाओं को साइंटिफिक अप्रोच के साथ सहायता दी जाए तो वो क्या कर सकते हैं। साथियों, कुछ दिन बाद आप यूनिवर्सिटी से बाहर की दुनिया में जाएंगे। निश्चित तौर पर पढ़ाई हमें दुनिया के लिए तैयार करती है, लेकिन ये भी सच है कि खेल हमें दुनिया की चुनौतियों से लड़ने का साहस देते हैं। आपने देखा है कि सफल लोगों में हमेशा कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं। उन लोगों में बस टैलेंट ही नहीं होता, टेम्परामेंट भी होता है। वो नेतृत्व करना भी जानते हैं, टीम स्पिरिट के साथ काम करना भी जानते हैं। इन लोगों में सफलता की भूख होती है, लेकिन वो हार कर फिर से जीतना भी जानते हैं। वो जानते हैं कि दबाव में काम करते हुए अपना बेस्ट कैसे देना है। ये सारे गुण पाने के लिए खेल एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। जब हम खेलों से जुड़ते हैं तो इन गुणों से भी जुड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो खेलता है वही खिलता है। साथियों, और आज मैं अपने युवा साथियों को खेलों से अलग भी कुछ काम देना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट की सुंदरता के बारे में हम सब जानते हैं। आप भी इन गेम्स के बाद मौका निकालकर अपने आसपास जरूर घूमने जाएं। और सिर्फ घूमे ही नहीं, अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी करें। आप हैशटैग नॉर्थ ईस्ट मेमोरीज का उपयोग कर मुझे भी ये तस्वीरें भेज सकते हैं। आप लोग ये भी कोशिश करिएगा कि जिस राज्य में खेलने जाएं, वहां स्थानीय भाषा के 4-5 वाक्य जरूर सीखें। वहां के लोगों से बात करने के लिए आप भाषिणी ऐप का भी इस्तेमाल करके देखिएगा। आपको सही में बहुत आनंद आएगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप इस आयोजन में जीवन भर याद रखने वाले अनुभव साथ लेकर के जाएंगे। इसी कामना के साथ एक बार फिर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। So that was Prime Minister Narendra Modi's video message on the opening ceremony of Khelo India University Games for the athletes, wishing them best and also asking them, urging them to put Northeast pictures through their social media platform and also use Bhashini app for all language-related concerns and communication. Now, with this, it's a wrap here on Express News for now, but news and updates will continue here on DD India. Thank you so much for joining us right now. Namaskar.